इंडिया में तुमने ये तो सुना ही होगा कि सब लोग ये कहते हैं कि जापान कितना ज़्यादा अच्छा देश है, कितना सुंदर देश है, वहाँ के लोग कितने रिस्पेक्टफुल हैं। तो फिर चाइना ने ऐसा क्यों बोला कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर का सर बॉडी से डिटैच कर देगा अभी न्यूज़ में? क्या तुम्हें पता है जापान ने कितने सारे क्राइम्स करे हैं हिस्ट्री में, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और ना ही हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जापान ने क्या क्या करा है। लेकिन जापान को एक विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है कि हिस्ट्री में जापान के ऊपर ही सारे क्राइम हुए हैं, सारे परमाणु बम जापान जापान पे फोड़े गए हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि जापान क्या कर रहा था आखिरकार। जापान ने क्या क्राइम करे जिसकी वजह से चाइना उस पर इतना गुस्सा है, जिसकी वजह से कोरिया भी उस पर काफ़ी गुस्सा रहता है। ठीक है, जापान ने कई सारे वॉर क्राइम्स किए हैं। बस बात यह है कि उसकी बैकिंग में अमेरिका है, तो अमेरिका उसको बैक देता है। एक तरह से वो प्रॉक्सी है अमेरिका की जापान। ठीक है, जब अमेरिका ने जो बम गिराया तो उसके बाद एक तरह से समझ लो कि वो अमेरिका के कंट्रोल के अंदर ही है। तो इसलिए जापान वो नहीं है जो दुनिया सोचती है उसके बारे में। आइए देखते हैं क्या है जापान फिर। Hi, I'm just a fat little Asian man. Ever have that one Chinese or Korean friend that always gets all aggressive when you talk about literally anything related to Japan? Like, I'd just be talking about the new sushi place that opened up, and they'd all be like, Japan boycott is going on, bro. They literally massacred our people. Don't you know that? I'm sorry, but I'm a fat little Asian man, and nothing is stopping me from getting my sushi. If you don't know what's going on here, it's probably because you're familiar to the anime watching, convenience store socks wearing, train riding, vending machine enthusiast Japan. But there was a time very different from the ooh era of Japan today. You know, when they used to commit horrific war crimes in Asia. The deep social historical tensions caused by these war crimes are still a major social issue in Asia. Of course, when you've given the country equivalent of an HR apology, people are going to get pissed. It's also because the Japanese government regularly avoids mentioning or downplays atrocities, which is मतलब जापान के actually जो a स्कूल है very ना, उनके जो बच्चे होते हैं जापान के स्कूल में, उनको भी ये बताया जाता है कि हम पे क्या क्या क्राइम हुए हैं। ठीक है, तो हम पे बम गिराए गए। ठीक है, हमारी जो आर्मी है उसके साथ इतना गलत हुआ। हमारे जो शोगन थे उनको हटाया गया, उसके बाद जो हमारे किंग थे उनको भी हटा दिया गया बम गिरने के बाद। तो ये हमारे साथ बुरा हुआ, पर वो ये नहीं पढ़ाते कि उनने क्या क्या करा। ठीक है। Asian thing to do. Stuffing down problems and acting like they don't exist, very Asian. Easily the biggest controversy is the Yasukuni Shrine, where the politicians go to honor the soldiers of World War II, even the war criminals, which is kind of crazy if you think about it. This would be like if Angela Merkel went to Auschwitz and prayed for the souls of dead Nazis. Stuff like this results in boycotts and protests towards Japan from time to time. But honestly, it doesn't deter Japan at all. I mean, why would it? Not only did they basically get away with their war crimes, it helped them grow into one of the biggest economies in the world. How? Well, it's a mixture of Cold War politics, diplomatic interests, and a lot of money. But before we take a look at what happened, let's take a look at what Japan did. Imperial Japan was kind of a crazy colonizer back in the days, but before all that, they used to be just like any other feudalist Asian country. Until 1853, when the US of A came knocking at their doors and gave them a choice: life or slave. The Japanese had witnessed what happened to China after the Opium Wars, so they quickly opened up to the West. It became apparent to the Japanese that their shogunate status quo was very outdated. So they got rid of the shogun and declared the Meiji Restoration, embracing Western systems, reforms, and traditions. मतलब शोगन जो थे वो सामुराई थे। ठीक है, और सामुराई में भी एक इनका लीडर होता था, उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद एक तरह से मोनार्की जो होता है, किंग को रख दिया गया। ठीक है, तो उसे मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ पहुँच गया था। अमेरिका ने बोला था कि ट्रेड्स करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का लैंड लॉक्ड एरिया है और जापान में कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उनको वो सब इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी उनको ये करना पड़ा था। In a staggering speed of just 40 years, Japan went from a small island kingdom to the only modern industrial state in East Asia. The Japanese learned quickly from their colonizer senpais and gathered experience by causing Korea and beating China and Russia, becoming the dominant power in Asia. अब क्या हुआ, ये बहुत पहले डेवलप हो गए। ठीक है, बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से। तो इनने क्या करा, चाइना पे भी हमला करा। ठीक है, रशिया
पे भी जीत ली, ठीक है। तो फिर जापान काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि हम पूरी दुनिया ही जीत लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह जीतते जा रहे थे अनटिल जब वो पर्ल हार्बर पे उन्होंने अटैक करा, उसके बाद अमेरिका ने उन पर अटैक करा, तब उनको अपनी नानी याद आई। उससे पहले तक वो Then they जीत ही रहे थे। started to have questionable friend choices, and from them, Japan mastered its secret method, erasing any sort of human rights in their colonies. Like how there's always that one Asian guy that's better than you, the Japanese were extremely skilled in war crimes. Let me give you a quick rundown of the Japanese war atrocities. Here's a simple one to start: genocide and mass murders. The Japanese wanted to stomp their enemies into the ground with no chance of revival, so they created as much death and destruction as possible. Probably the most famous is the Nanjing Massacre, where 300,000 Chinese people died in mass executions, a third of the city destroyed in fires, with other thousands of rape and brutality cases, in just a few days. Other lesser known but यही equally कारण है नैनजिंग मैस्कर जो है जापान की वजह से जो हुआ था चाइना में, उसकी वजह से ही चाइना इतना ज़्यादा गुस्सा रहता है हमेशा जापान पे, ठीक है। जो इनने क्राइम्स करे, अगर तुम उसके बारे में सोच लोगे तो तुम्हें लगेगा कि नाजीज भी इनसे पीछे रह गए जापान वालों से, क्योंकि जिस हिसाब से इनने क्राइम करे थे अपने टाइम में वो बहुत खतरनाक। brutal massacres exist too, like the Manila Massacre, where over 100,000 Filipino civilians were slaughtered with the city completely left in ruin. There's also the Suk Ching massacres in Singapore and Malaysia, where over 50,000 civilians were killed. Number 2. Comfort Women. The Japanese needed a way to reward soldiers deployed to war zones. So instead of something normal like giving more pay or better food, they tricked over 100,000 women into sexual slavery. While mostly from Korea, thousands of women were also trafficked from Malaysia, Philippines, and Indonesia. These women were sent straight to the front lines, where not only were they sometimes violated up to 40 times a day, they also had to clean, wash, and cook as well. Many died from abuse, torture, disease, caught in the crossfires, and executions to cover up crimes. Number 3. Forced labor. There was always a shortage of resources due to the long war, so Japan forced millions of people to work with basically no pay as a solution. Through the Romushas, up to 10 million people from Indonesia, Malaysia, Burma, and POWs were gathered, having to work in grueling conditions such as railways and mines, where many died of malnutrition and exhaustion. Probably the most deadly were the railways, where sometimes up to 80% of Romushas died in the extreme conditions. Last but not least, human experimentation. Because human rights मेन didn't जो exist इनने in the करा वो तो जो औरतों को बंदी बना के 100,000 औरतों को फिर फ्रंट लाइन पे जवानों को कंफर्ट करने के लिए भेजना, सबसे मेन क्राइम तो ये भी था इनका। दूसरा जो ये बता रहा है अभी ये वाला, the military used this opportunity to test biological weapons and perform blind बच्चों पे भी इनने टेस्ट करे थे, छोटे छोटे बच्चों पे इनने, ठीक है, human experiments related to एक्सपेरिमेंट्स pain. करे थे। They set up a research lab in China called Unit 731, where they performed experiments on the locals. Around 12,000 people died directly due to मतलब आजकल ऐसे साइंटिस्ट होते हैं वो चूहों and को chemical मतलब करते हैं, ठीक है, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ड्रग्स के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे इन लोगों ने इंसानी बच्चों पे, ठीक है, चाइना के बच्चों पे, ठीक है, वैसे एक्सपेरिमेंट करे थे। experimentations, including pathogens and poison gases. Outbreaks caused by Unit 731 resulted in an estimated 200,000 deaths outside the facility too. There's a lot more other Japanese atrocities too, but they usually fit into the 4 categories above more or less. Of course, all war crimes ended in Japan when, Imperial Japan went out with a bang. Okay, बस यही बात हुई ना, फिर इनने क्या करा, इनने सब कुछ जीत लिया है ना, चाइना भी इनने लगभग आधा हरा दिया था, ठीक है, तो इनको लगा कि अब तो हम सीधा अमेरिका के पास ही जाते हैं, क्योंकि ये जो मैप है ना, अगर तुम ऐसे जाओगे तो सीधा अमेरिका पहुंच जाता है पीछे से, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, ऐसे गई है और इनने अमेरिका के पर्ल लेवल पे हमला कर दिया, फिर अमेरिकन ने इन पे हमला करा, ठीक है। तो फिर अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था बीच में, ठीक है। मिडवे आइलैंड था एक, वहाँ पे भी काफ़ी लड़ाई हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को लगा कि क्यों ना इन पे एटॉमिक बम गिरा के पूरी वॉर ही ख़त्म कर दे। जैसे ही बम गिरे दो, इन लोगों ने two bangs. हार मान ली। The nuclear strikes on Hiroshima and Nagasaki are huge tragedies too, but it also shaped Japan's future in its favor. You see, unlike Germany, which was taken down by Allied forces from all directions,
leading to its West-East Germany dismantling, Japan's defeat was mostly all-American, with no Soviet troops in Japan. This basically gave US the sole command of what to do with Japan post-World War II. Initially, the US had मतलब जापान को बेसिकली अमेरिका ने ही हराया था, ठीक है। तो अमेरिका पे एक तरह का बॉस वाला वो आ गया ना कि भाई हमने ये को हराया है, ठीक है। तो उनने क्या करा, उनने जो इनका ये एम्परर था हिरोहितो, ठीक है, इसको मारा नहीं। जो ट्रायल होते हैं ना वॉर क्राइम्स के, उसमें इसको छोड़ दिया, इसको जीने दिया, ठीक है। तो फिर इसको भी मारना चाहिए था क्योंकि इसने तो यही तो था, कमांडर था, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये उनका जापानीज का लीडर था, ठीक है। और अमेरिका एक अच्छी छवि बनाना चाहता था जापान में कि हम कितने अच्छे हैं, तुम्हारे इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि वो खुद जापान को कंट्रोल करने वाले थे, अमेरिका के लोग, ठीक है। और वो अभी तक करते हैं। कई सारे जो बेसिस हैं अमेरिका के, वो जापान में बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। been focused on decentralizing Japan, like disbanding the military, introducing democracy, and disbanding large conglomerates. However, Asia was becoming the center of Cold War tensions, with the CCP taking over China and North Korea getting support from the USSR. The US needed a stable ally in Asia quickly, and what better than to use the one they already have total बस control over? तो इनको जापान भी मिल गया फिर, ठीक है। एक एक स्टेबल इनका होना चाहिए था ना कि वो इन्हीं की प्रॉक्सी है, तो इनको जापान मिल गया इसलिए। This is when the US rolled back the decentralizing it had done, moving to transform Japan into a stable capitalist ally through economic and political stability. It was during this period where the US started rebranding Japan's image. The media began extensively highlighting the US-led democratic reforms on Japan, creating the narrative that Japan was reborn into a peaceful country through adopting Western values. No longer इनने साइन करवा लिया कि भाई अब तुम अपनी आर्मी जो है इससे बड़ी नहीं हो सकती तुम्हारी आर्मी, ठीक है। बड़ी बड़ी मिसाइल तुमने रखोगे, ठीक है। और फिर अमेरिका ने क्या करा, इनको रीब्रांड कर दिया एक तरह से कि अभी एक पीसफुल नेशन है, ये कोई हथियार आर्मी नहीं रखेगा, ठीक है। ऑल दो अगर कोई हमला करता है जापान पे तो अमेरिका की बैकिंग है जापान पे, ठीक है। तो इसलिए कोई वैसे ही हमला नहीं करेगा जापान पे। was Japan that arbitrary Asian enemy who eats raw fish with rice, but instead a mysterious ally with pretty clothes, cherry blossoms, and cool katanas. When the Korean War broke out in the 1950s, the US emphasized again that Japan was the most important ally in Asia. The US support and rebranding of Japan did help stabilize Japan's miserable post-war. However, in the process, a lot of the World War II atrocities were covered up or downplayed as well. We can see this in the तभी तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो अमेरिका ही है, ठीक है। बचपन में मैं सोचता था कि अमेरिका कितना अच्छा है क्योंकि इनने सारी हॉलीवुड मूवी ऐसे थे एक बना रखी हैं कि अमेरिका एक तरह का सेवियर है और वो बाकी कंट्रीज के लोगों को भी बचाने आता है। लेकिन असलियत में अमेरिका पीछे से काम करता है, कभी सामने से काम ही नहीं करता है, ठीक है। जो भी छोटी मोटी कंट्रीज है ना जहाँ पे भी रिपेलियस हुआ है, ठीक है, जहाँ पे सरकार पलटी है, वहाँ तुम पीछे देखोगे तो CIA का या फिर अमेरिका के होते हैं कंट्रोल करने वाले लोग, ठीक है, गवर्नमेंट trials. Basically the Japanese version of the Nuremberg trials, where war criminals were tried and sentenced. Unlike the Nuremberg trials, the Tokyo trials were mostly arranged and led by the US, with much little intention than its Western. न्यूरेमबर्ग ट्रायल में तो क्या था कि जर्मनी के जो क्रिमिनल्स थे नाजी, ठीक है, उनको किया गया था, ठीक है, प्रोसिक्यूशन उनका। तो उसमें क्या था कि बाकी सारे अलाइज ने मिलकर भी उनको हराया था, तो इसलिए रशिया के भी अलाई आ गए, फ्रांस के भी आ गए, ठीक है। तो इसलिए वो उस तरह से कंट्रोल हुआ, ठीक है, उनको सजा दी गई। तो उनमें सजा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दी गई थी। लेकिन टोक्यो ट्रायल में क्या था, बस अमेरिका ने हराया था तो अमेरिका ने ही इनको जजमेंट दी, ठीक है। इसलिए उनकी जो एम्पायर है उसको छोड़ which दिया। meant that the US had more control over the trials and its sentences. Another problem was that most victim countries were either still colonies or going through some post-independence chaos, and they didn't have much of a say during the trials. This led to the biggest cover-up in the trials, that Emperor Hirohito of Japan and his family were exempt from the trials. The US deemed them necessary for Japan's post-war stability. सबसे बड़ा क्रिमिनल तो एम्पायर हिरोहितो ही था, लेकिन इसी को छोड़ दिया बस ये दिखाने के लिए कि अमेरिकन कितने अच्छे हैं, तुम्हारे एम्पायर को छोड़ दिया है, ठीक है। Depicting him as a powerless figurehead, when in reality, he was still involved in the decision-making, such as approving the attack on Pearl Harbor and knowledge about atrocities like the Nanjing Massacre. Instead, trials centered around top military and political leaders, given the death penalty. However, subsequent rounds of trials were limited, and many officials were paroled in the 1950s.
Many of these officials then went on to serve in the post-war government. बाकी ऑफिशियल्स को भी काफ़ी लोगों को छोड़ दिया बाद में इन्होंने. Companies that led forced labor and funded Japanese military operations were given more मतलब इनको अपने एक तरह से एशिया में दबदबा बनाना था ना अमेरिका को, ठीक है. तो इनने अपनी वॉर को इस तरह से यूज करा. तुम इनका दिमाग देख रहे हो अमेरिका वालों का. power and resources as they बाकी कोई होता तो उनको क्या करता, उसको हरा के कब्जा कर लेता, ठीक है, फिर अपनी गवर्नमेंट वहां बैठा देता, ठीक है. लेकिन उनने क्या करा, उनने उसको जापानी रहने दिया, ठीक है, जिससे एक एशिया में भी अच्छी छवि बन गई कि भाई नहीं, उनने उसको लूटा नहीं है, ये लोग सेवियर है. लेकिन करा क्या इन लोगों ने, ठीक है, इन लोगों ने उसको हरा तो दिया लेकिन कंट्रोल उसको कर रहे हैं पीछे से, ठीक है, जापान को. were seen as vital for economic stability. क्योंकि अमेरिका वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तुम रशिया का हाल देख लो, रशिया कितना ज़्यादा बड़ा है, संभलता ही नहीं है, ठीक है. तो अमेरिका वैसे ही इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम और भी जगह पे लोगे तो फिर वो कंट्री संभालनी मुश्किल हो जाएगी. Also, many of the scientists did not face trial for human experimentation, and instead just got away with handing over their research. Of course, all of this was either censored out or just not talked about at all, distorting the collective memory of wartime responsibility. Remember, the US needed Japan more than ever. It was in their best interest to get over and hush down the trials and reparations ASAP so that they could deal with other priorities. Speaking of reparations, Japan really lucked out the most here. You see, the US didn't want its new capitalist project to run out of money from all the lawsuits it was going to receive. It was just also really convenient that the US happened to host the San Francisco Treaty, the general principles outlining the Japanese reparations. Here, the US emphasized multiple times that Japan had limited ability to pay up and oppressed Asian allies like the Philippines, South मतलब अमेरिका ने किस तरह से दिखाया कि जापान तो काफ़ी गरीब देश है, इसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है, बमबारी हो चुकी है, इन लोगों ने खुद ही करी थी, लेकिन जापान कैसे पे करेगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को अपना पैसा ही लगाना था जापान में, ठीक है. तो ये लोग कमाते हैं ना जापान से, तो इन लोगों ने पहले से तो गरीब दिखाया, जिससे कि बाद में जापान जब जो वॉर का एक वो होता है, रेपरेशन होते हैं, हट जाना होता है, जो उस कंट्रीज को उसने खराब करा है उनको देना होता है ना, तो वो कम देना पड़े, और फिर जापान को कम देना पड़ा फिर वो. and Australia to lower their demands. This was done by a sneaky trick where the US would encourage countries to seek separate bilateral agreements with Japan. Then, the US would join in on those agreements, pressuring countries to ask for less money. Most importantly, they would frame the reparations as economic cooperation, which meant instead of paying money, the reparations were paid mostly in goods, services, and development projects spread out over a decade or two. मतलब जापान तुमको पैसे नहीं देगा, लेकिन तुम्हें ये सारी सर्विसेज दे देगा, तुम्हें इक्विपमेंट दे देगा, फैक्ट्री की मशीनें दे देगा, ठीक है. इससे क्या होगा, जापान जो होगा वो खुद अपनी जो इकोनॉमी है वो भी तो ग्रो कर लेगा जब वो इनको बनाएगा तो, ठीक है. तो इससे जापान को और फायदा होगा, उसकी इकोनॉमी और बूस्ट होगी, और यही हुआ था, ठीक है, Here's some examples. 1980s में. 223 million in 12 years for Indonesia, 550 million in 20 years for Philippines, and 500 million in loans for South Korea. It was actually by paying these reparations that Japan's industries would develop even further. You see, Japan had already developed its dying post-war industries by supplying equipment during the Korean War. Now, it meant that industries were ready to match the steady demand of Japanese goods created by these reparations. Plus, it gave Japanese industries the experience it needed dealing with large-scale overseas contracts to later compete globally. It's no wonder that Japan's GDP grew an average of 10% annually, and exports tripling in 12 years, showing Japan's economic expansion during the payment period. Japan's economy grew so much, the scale of Japan's economy would allow it to use its ties with Southeast Asia created during its payment period to become the top trade partner and investor in the तभी तो region. स्कूल टाइम पे हम लोग कहते थे यार जापान कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है, लेकिन रियलिटी में ये रीजन था उसका, ठीक है, By the कि 1970s, वो, ठीक है, अपनी जो है अमेरिका की मदद से अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा था. Japan had become the third largest economy, creating a massive trade imbalance between the developing Southeast Asian countries. Japan used the trade dependency at the time to create investment projects which exploited resource extraction and cheap labor for intensive manufacturing sectors. Later, they did stop, but only after anti-Japanese protests sparked across the region. So, basically in Asia, Japan killed up to 20 million civilians, burned all their cities, 20 मिलियन सिविलियन, ठीक है, जापान ने अकेले ने मारे. नाजीज जो थे उनने कितने जू मारे थे,
बोला जाता है कि 6 मिलियन मारे थे, ठीक है, लेकिन वो भी एक अलग कहानी है। और इसमें 20 मिलियन industries and killed millions more from forced labor and famine caused by occupation policies, but also emerged as one of the greatest beneficiaries of the reparations process. मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करता है जापान, विक्टिम कार्ड प्ले कर गया, ठीक है। In the 1980s, Japan became the second biggest economy in the world by cheaply purchasing essential raw materials and agricultural products from Southeast Asia, then benefiting from a high return from the finished product even till today. This ironic economic success is probably the biggest reason why Japan can get away with denying or downplaying their wartime atrocities. To them, the criminals were tried, they paid the fees, and now their legal responsibility is finished. Oh yeah, हाँ भाई, हमने तो जो कंट्रीज के साथ बुरा करा था उनको वो पे कर दिया जो हमें करना था, ठीक है। अब हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि did हमने I ऐसे काम forget to करे। mention that अब Japan डिनाई करता है वो। basically ignores all its victims? That's because they sneakily added in that once they pay the country's government, they are exonerated from all future individual reparation cases. It's why Japan can and has repeatedly denied comfort women from existing while ignoring all survivors. डिनाई कर दिया कि हमने वुमेन को इस तरह से इस्तेमाल करा था। सबसे मेन रीजन तो यही है, वुमेन के साथ जो इन लोगों ने करा ना, काफ़ी खतरनाक वाला काम करा है। चाइना का अगर तुम देखोगे ना, नैनजिंग मैसकर, यूट्यूब पे सर्च करना तो चल जाएगा पता क्या क्या करा जापान ने, ठीक है। तो मेनली यही है कि इसकी वजह से ही कोरिया, चाइनीज़ लोग तो खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट रहते हैं। Probably why China and Korea have such negative views on Japan. Also, Japan's so economically and politically buff that they can basically ignore any backlash they get from continuing to worship war criminals in the Yasukuni Shrine or creating education policies to deny or downplay atrocities in textbooks. ASEAN is not really going to address these issues because Japan is one of their most important trading partners. China is Japan's biggest competitor and threat in the region, and they're not really going to care what China says. South Korea can only say so much before the US goes, "Father is going to be very upset." The times are in Japan's favor too. More people are beginning to forget about history and look at Japan more favorably. वही तो, लोग हिस्ट्री नहीं जानते भाई। कोनिचिवा, लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं जापान के, कितने रिस्पेक्टफुल हैं। वो बात सही है लोग ठीक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि I mean, who doesn't love Japanese stuff? Anime is peak, Japanese games hit different, their fashion brands are top tier, food is great, I can personally attest to that. लेकिन अब तो जापान में थोड़ा रिसेशन आ रहा है क्योंकि इनका जो यन है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, इसलिए Japan काफ़ी लोग also टूरिज्म has कर one रहे of हैं the जापान most में। international exchange programs in Asia, with highest number of foreigners yet. और इसीलिए अब जापान भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बोल रहा है, ठीक है। अब और अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमें भी अपनी आर्मी बढ़ानी है, ठीक है, जो इतने सालों से इन लोगों ने मना करा हुआ था कि हम नहीं बढ़ाएंगे। अब क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि इनको भी डर है, ठीक है, क्योंकि यूएसए खुद अब इकोनॉमिकली अनस्टेबल हो रखा है, ठीक है। तो जो इनका पापा है वो अनस्टेबल हो रखा है, तो ये लोग तो फिर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम में आई जाएंगे। तो And यही South Koreans are starting to like Japan more these days. So yeah, इसीलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी इंटरवीन करेंगे अगर ताइवान पे चाइना कुछ करता है तो। और तभी चाइना ने बोला कि द हेड दैट स्टिक्स आउट विल बी कट ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए चाइना ने बोला, क्योंकि चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा क्राइम कर चुके हैं ना कि चाइना लोग कुछ भी सुनना नहीं चाहते इनके मुंह से, चाइना के लोग। that's the story of how Japan not only got away with their war crimes, but profited from them as well. Honestly, I don't blame Japan. I mean, all the other countries sweep their atrocities under the rug too, right? Which, I guess that's the meta, to be honest. So, in case you ever get to run a country yourself and commit some serious war crimes, it's the meta to just cover them up and not talk about them. Till then, हाँ भाई, लेकिन जिन क्रिमिनल है वो तो कवर करेगा ही। बाकी जो कंट्री इन पे हुआ है उनको भी थोड़ा करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही है, मीडिया इन कंट्रीज़ के कंट्रोल में इतना है नहीं, ठीक है। और जो मीडिया है वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। आजकल देखा जा रहा है ना, हर जगह के मीडिया ही कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, क्योंकि अगर लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो तुमने पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया। ये बात है। अच्छी वीडियो थी काफ़ी, लाइक मार देते हैं, देख लेना वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।